Greetings. Today's topic is harmonic oscillator problem. Harmonic oscillator problem. As an example of Hamilton's Jacobi's method. So harmonic oscillator problem as an example of Hamilton's Jacobi's method. So in this method we are required to find the value of L with respect to Jacobian. So here I am not taking the part, I am just explaining what is L. L is equals to, या Lagrangian is equals to 2 times alpha cos square omega t plus beta minus half. This equation and a equation L is equals to 2 times alpha integral of cos square omega t plus beta minus half. Both of these equation where L is defined to be the function of alpha cos square omega t plus beta minus half, या L is the function of 2 times alpha integral of cos square omega t plus beta minus half. These two equations are the Hamilton's principal function in the time integral of the Lagrangian. तो यहाँ पे cos square omega t plus beta ये जो है ये हैमिल्टन्स इंटीग्रल फंक्शन है और यही दो इक्वेशंस हैमिल्टन्स ऑसिलेटरी प्रॉब्लम का सल्यूशन है. अब इसी हैमिल्टन्स ऑसिलेटरी प्रॉब्लम सल्यूशन इसी को ध्यान में रख के वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज obtain the complete solution of the Hamilton's Jacobi's equation of motion. Obtain the complete solution of Hamilton's Jacobi's equation of motion. So here we start by saying consider a system for which H is conserved. If H is conserved, that means H does not take an active part in the system. That is, H will be the function of Q comma P, and H will be the function of Q, and the partial derivative of P will be del S upon del Q. Now how come P is written as del S upon del Q? So here the reason is because H is conserved, so H won't take an active part in the function. Therefore I can canonically transfer small p to capital P pi with generating function f2 upon del qi. तो अगर हम जनरेटिंग फंक्शन p को ट्रांसफ़र कर रहे हैं f2 फंक्शन के लिए तो pi की जो वैल्यू रहेगी हैमिल्टन h चेंज हो जाएगा s के अंदर, और s क्या है? s इज़ द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन. सो हियर आई विल से वेयर s इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन. Now the Hamilton's Jacobi's equation becomes H is the function of Qi and del S upon del Qi. अगर Q का फंक्शन है तो it is the function of all Qi's del S upon del Qi plus principal function del S upon del T should be equals to 0. The total, because the momentum is conserved, therefore you get the total variable is equals to 0. Now let us assume S is the function of all Qi's, alphas and T. S principal function है. Principal function जो रहता वो Q का है, अल्फा का है और T का है. अल्फा एक्चुअली ये कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म्ड है Pi का अल्फा के ऊपर. Now this will be again replaced by omega Qi comma alpha I minus alpha I t.
So omega is the function of all qi's and pi's minus alpha I t. Name this is your equation 1 and this is your equation 2. Now if you take the partial derivative of del s upon del qi, here you will get del w upon del qi, and if you take the partial derivative with respect to t, you will get only minus alpha I. Now this alpha I can be alpha 1 if we are talking about the particle 1. So here equation number 1 will imply, now see, del s upon del t is minus alpha I. So this equation 1 will be reduced to h is the function of qi comma del omega upon del qi is equals to alpha I, and this is your equation 3. So equation 1 जनरल हैमिल्टन इक्वेशन थी, उसको हमने प्रिंसिपल में चेंज किया, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाले और पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर उसको रिप्लेस किए. नाउ हियर दिस फंक्शन ओमेगा, this function omega is called Hamilton's characteristic function. Now this is also a question of MCQ कि ये इक्वेशन गिवन है एच क्यू आई कॉमा डेल ओमेगा अपॉन डेल क्यू आई इक्वल्स टू अल्फा आई, और इसके अंदर हमको पूछा गया कि हैमिल्टन्स की कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कौन सी है. तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका निकल गया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओमेगा del omega upon del qi is the Hamilton's characteristic function. So this is part 1 completed. Now using this characteristic function we have to we have to find Hamilton's equation of motion. So Hamilton's characteristic function omega, this omega can be used to generate a canonical transformation. Omega can be used to generate a canonical transformation which with all the new coordinates which are cyclic. Now ओमेगा जो हमने फंक्शन निकाला था, ये ओमेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी देख लिया कि पार्शियली डेरिवेटिव इज 0. देयरफॉर जो भी फंक्शन ओमेगा के साथ इंक्लूड होगा दे ऑल विल बी साइक्लिक, बिकॉज वी नो दैट साइक्लिक फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है. ओके, नाउ कंसिडर